अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह। आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, इनके दो टाइप्स के बारे में जो कि है इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है ना वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है ना वो हमारे साथ प्योर फॉर्म ऑफ semiconductors is known as intrinsic semiconductors. Conductors in such semiconductors the number of free electrons in conduction band is equal to the number of holes in valence band. इस तरह के कंडक्टर्स को सेमीकंडक्टर्स को जो है ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा जो है वो है हमारे साथ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Extrinsic semiconductors when an impurity is added in semiconductors, they are known as extrinsic सेमीकंडक्टर्स। इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब टू टाइप ऑफ impurities are added in the pure crystal of semiconductors. There are two types of semiconductors of impurity added in semiconductors. The impurities added of third group elements of third group are called acceptors impurities, and the impurities added of elements of fifth group are called donor impurities.
ये दो किस्म की इम्प्योरिटीज़ है जिसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ये थे हमारे साथ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड ऑल फॉर वाचिंग।